Hello. Hello, am I audible? All right, let's start with the questions now. Okay, let's start with the first question for the day. Question 1. A train starting from rest. A train starting from rest attains a velocity of 72 km/h in 5 minutes, assuming uniform acceleration. The distance covered by train is blank. Option A 3 km, option B 2 km, and option C is 5 km. Option D is 10 km. Okay, these are your options. Solve and tell me the answer. Don't forget to convert the units, which are very important. Anyone got the answer? Okay, Mahit is saying option A. Mahit is saying option A. Anyone else getting the answer? So it will be competency based question, so it will be going to be challenging. Okay, another option A. We will solve it as well. No issues. अगर नहीं होगा आपसे तो मैं सॉल्व करके दूंगा. No need to worry. Okay, let's solve. A train starting from rest. तो उसका initial speed क्या होगा? 0. Attains the velocity of 72 km/h. तो इसको हम कन्वर्ट कर दे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. हमको टाइम कितना इज गिवन 5 मिनट्स. सो 5 मिनट्स यानी कितने सेकंड हो गए? 300 सेकंड्स.
तो हमारे पास ए, वी और टी सारी चीजें हैं. ओके, वेरी गुड कृष्णराज, यू गॉट ऑप्शन ए एज वेल. वेरी गुड ईशा. Okay, 30 kilometer, 30 is not there, 3, it will be 3. All right, so now when you are having, now you can find the value of, that is v minus u by t. Okay, so from this you will get 20 minus 0 by 300, so it will be 1 by 15 meter per second square. Now v square minus u square, s is equal to v square minus u square by 2a. Using this formula you can find out 20 square minus 0 square by 2 into 1 by 15. So it will be 400 into 15 by 2. So it will be 3000 meter. So answer is 3 kilometer. Okay, so option A is the right answer. Any doubt? Anyone? Any doubt? Okay, yes, one thing I would like to add कि ये जो है वो सारे चेक पॉइंट्स है. तो हर 10 क्वेश्चन के बाद तुमको मुझे बताना है कि तुम्हारे मार्क्स कितने हो रहे आउट ऑफ 10. ठीक है, on the basis of the amount of question you'll be able to solve. All right, now second question. 4 students A, B, C and D carry out experiment on law of conservation of mass. ठीक है, 4 जन ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर. तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, उनके जो ऑब्जर्वेशन है वो तुम्हें यहाँ पे लिख के दे रहा हूं. दैट इज मास ऑफ reactant will be greater than product. Mass of reactant will be greater than product. Mass of reactant will be equal to product. And option D, volume of reactant will be equal to volume of product. Okay, which will be the correct one? Quickly you can answer it, simple. Yes, very good Surya, Krishnaraj, Isha. Also some reactions are given. Okay, you can use that. So option C, everyone getting? Mass of reactant is equal to mass of product. Perfect detailing. तो वो सही आंसर है. चलिए, तो ये वाला क्लियर है क्वेश्चन. लेट्स स्विच टू क्वेश्चन नंबर 3. Let's switch to question number 3. Which cell organelles plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs? Option A is Golgi apparatus. Option B is SER. Option C is lysosomes. And option D is vacuoles. आंसर बताओ.
व्हाट इज दैट सिंबल कॉल्ड टू बी? क्या लिखा है वो? ये वाला इमोटिकॉन समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है. ओके, एवरीवन इज सेइंग ऑप्शन ऑप्शन बी, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वापस आया. हाँ, वो सही है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. परफेक्ट. यू ऑल आर वेरी गुड विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. फटाफट आंसर आ रहे हैं, बढ़िया है. मोर क्विकली यू विल गिव द रिस्पॉन्स. ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं हम इन अ सेशन. देन क्वेश्चन नंबर 4. A constant force acts on an object of mass 5 kg for 2 seconds, increasing its velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. ठीक है. So magnitude of force is blank. Option A is 5 Newton, B is 10 Newton, C is 15 Newton, and option D is 20 Newton. चलो एक और न्यूमेरिकल आ गया आपके सामने. लगा दो फटाफट ये वाला सवाल भी. न्यूमेरिकल है, so you can take your time. Okay, 10 Newton. Isha, Mahit, then Navya, Surya. They are saying 10 Newton. What about others getting the same? Okay, again 10. Okay, Vishnaraj also got the 10. So it's perfect. 10 on 10. सही आंसर है, बढ़िया एकदम. चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जब भी तुम्हें वेलोसिटी दिया है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, वेलोसिटी के एक्सेलरेशन में वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, v माइनस यू बाई टी. तो मास यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 kg. देन इट इज 7 माइनस 3 एंड टाइम दिया है 2. So 5 into 4 by 2. So answer will be 10 Newton. Perfect. Cheers. Superb. फटाफट सोल्व कर दिया. ओके, तो 10 न्यूटन है वो. परफेक्ट आंसर है, एक्यूरेट एकदम. लेट्स स्विच टू क्वेश्चन नंबर 5. Let's switch to question number 5. Formula of aluminium sulfate. Option A, AlSO4. Option B, Al2SO4 thrice. Option C is Al3SO4 twice. And option D, AlSO4 thrice. Formula of aluminium sulfate. Formula of aluminium sulfate. B, option B, option A. What about others? इसके लिए मैंने बोला रखा है तुम्हें कि आयंस तुम्हें याद कर लेने. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द आयंस. ठीक है. सो एल्यूमिनियम का आयन क्या होता है, Al3 प्लस
एंड सल्फेट का आयन होता है SO4 2 माइनस, तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्रॉस, तो तुम्हें मिल जाएगा Al2 SO4 thrice. So it will be Al2 SO4 thrice. Perfect. Any doubt? Anyone? Option B is the right answer. Okay, then let's solve the question number 6. Question number 6. Athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be displacement after 2 minutes 20 seconds? Option A is 0 meter, B is 100 meter, C is 200 meter, and D is 440 meter. ये सेम सवाल एनसीईआरटी में दिया है, ओके, पुरानी एनसीईआरटी का है, फिलहाल अभी तो नहीं, एक बुक आ गई एक्सप्लोरेशन. ओके, सॉल्व इट. Okay, one is saying option C, Maiti is saying option B. Okay, what about the others? All right, C. Okay, option C, 200 meter. One more response. Okay. Isha also got option C. ठीक है. Yes, it is the shortest path covered that you need to find. Perfect. Good logic. वो सही है. Perfect. चलो, एक राउंड लगाने में उसको 40 सेकेंड लग रहे हैं, तो 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कितना टाइम हो गया? ये टोटल 140 सेकेंड हो गया. तो पहले 40 सेकेंड में एक राउंड, फिर दूसरे 40 में एक राउंड, फिर दूसरे 40 में एक राउंड, और फिर बचे उसके पास 20 सेकेंड और. तो उसने क्या किया? 3.5 राउंड कंप्लीट किए. 3.5 राउंड. अगर वो 3.5 राउंड कंप्लीट कर रहा है तो वो वापस सामने की ओर जाएगा. यहाँ से स्टार्ट किया है तो घूम के यहाँ पे आएगा, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसके डायमीटर जितना. तो डायमीटर कितना है? 200 मीटर. तो आई होप कि यही लॉजिक लगा के तुम लोगों ने सॉल्व किया है, जो एकदम सही है. एनी डाउट? एनी डाउट? एनीवन? एनी डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. Plasmolysis in a plant is defined as plasmolysis in plant is defined as option A, breakdown of plasma membrane, option B, shrinkage of cytoplasm in hypertonic
medium. Option C, shrinkage of nucleoplasm. And option D, breakdown of cell wall. ये हुआ competency. Definition क्या है? Hello sir, I am your biggest fan from Canada. Hello. What's your name? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी. अच्छा, इसमें कंफ्यूजन आया है. ओके, तुम लॉजिक लगाओ, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा देता हूँ. All right. Am I audible? Am I audible? All right. So option B will be the right answer. Shrinkage of cytoplasm in a hypertonic medium. When it is placed in a hypertonic medium, it will start to lose the content that present within the cytoplasm. Okay, or you can say protoplasm as well. So that is the definition of plasmolysis. So I hope it is clear. Okay, are you enjoying these questions? वो तो बता दो. Are you enjoying these questions? अच्छे questions है, right? Hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass. Hydrogen and oxygen combine in ratio 1:8 by mass to form water. Then what mass of oxygen gas is required to react completely with 3 grams of
हाइड्रोजन गैस। ओके, चलिए ऑप्शन ए बताता हूं। 8 ग्राम, 16 ग्राम, 24 ग्राम, 32 ग्राम। ओके, कितने ग्राम हाइड्रो ऑक्सीजन लगेगा टू रिएक्ट विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसके साथ रिएक्ट करने के लिए? अच्छा, सब ऑप्शन सी बता रहे हैं 24। अच्छा चलो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट। उसके साथ ये भी बता दो कि इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। ओके, और वो लॉ किसने दिया था? Who gave this law and which law is applicable to solve this concept? Who gave this law? What is the law and who gave this law? वो बता दो। वाह माइट, बढ़िया है। Law of constant proportion, law of definite proportion, law of constant proportion, law of definite proportion. Okay, who gave this law? Who gave this law? Question 9. Who gave this law? Antoine Lavoisier? No. Joseph Proust. Let's see the next MCQ. Which of the following organelles contain their own DNA and ribosomes? Joseph Proust is the right answer. Mitochondria and lysosome, option B. Mitochondria and plastids, option C. Plastids and endoplasmic reticulum, option D is Golgi apparatus and vacuoles. किसके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है? Okay, mitochondria and plastid, option B. Mito and plastids. Mitochondria. ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। कौन सा आएगा सही? परफेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ये काफी बार पूछा जा चुका है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, उसके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स है। ऑलराइट, ये याद रखना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन बिफोर द चेक पॉइंट। फर्स्ट, car moves half the
distance with speed 20 kilometer per hour and remaining half with 60 kilometer per hour. Its average speed will be blank for the entire journey, but obvious. Option A is 45 kilometer per hour. Option B is 40 kilometer per hour. C is 50 kilometer per hour. D is 35 किलोमीटर पर आवर. चलो इसको हमने ट्रिक से सॉल्व किया था, हमने ट्रिक भी लिखा इसका. When two equal distance are there, हम कैसे करते हैं ऐसे सवाल. कल्याण ग्रेड में भी ऐसा सवाल किया था, जीमेंस में भी पूछते हैं ये वाला. Option B. Anyone else getting my option B? चलिए और किसी का आंसर आ रहा है? स्टिल सॉल्विंग. ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही पेपर में. Anyone else? Okay, now we are getting 40. What is the trick to solve such question? ट्रिक क्या था इसका? ओके, अगेन ऑप्शन बी. चलिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, फिर सॉल्व कर लेना. एवरेज फॉर इक्वल डिस्टेंस इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. तो 2 इंटू 20 इंटू 60, 20 प्लस 60 80. ये वाले से सॉल्व करो और देखो क्या आ रहा है. जादू, मैजिक, मैजिक फॉर्मूला है ये, मैजिक फॉर्मूला है. फटाक से आंसर आएगा. आ रहा है? Still not getting? 40 is the right answer. Yes. Ranjan is back. It is only applicable when distances are equal. 2 ones are and 2 40 and 2 ones are and 2 twos are 60 by 2, it is 30. It's not there in the option, is it? Okay. For this answer is 30. I have written the question incorrectly. Here it is given 30. Okay, now we can solve. 30 दिया यहाँ पे. Then you will get the answer from the option. So 2 into 30 upon 90. अभी करके देखो. So now you will get it 40. जिसका पहले 30 आ रहा था वो भी सही था. From this you can now get it, I guess. इससे आंसर आ ही जाएगा.
चलिए, now we have completed the first 10 questions. So tell me your marks out of 10, whatever the marks you have achieved. Very good, perfect. It was my error. Tell me your marks for the checkpoint 1 out of 10 and show some reactions. Yeah, I'm showing it. Very good, Krishnaraj. It is 10 on 10. Celebration for you. Again, it is 10 on 10. Celebrations for you. Okay, Navya. Good. You got 9. Smiles for you. Anyone else? For the first checkpoint. You will get this worksheet as well after the lecture. 9 or 10 is good. You get the worksheet after the session in the description box. मैं रख दूंगा वहाँ पे. Very good, Kanjan. 100 out of 100 for you. 1 out of 1 you solved. Okay, let's start with the question 11. What is the mass ratio of calcium to oxygen in calcium oxide, CaO? Okay, that is quicklime. This is quicklime. Now option A is given 5:2, option B is given 2:5, C is given 3:2 and D is given 5:4. Do you need atomic mass? याद है कि दे दूं? चलो दे देता हूं. Atomic mass for calcium is 40 and for oxygen it is 16. Atomic mass I have given. Okay, 5:1. It is not there in option. It's 5:2. 5:2. Okay, option A 5:2. It is getting A. Kanjan is also getting A. Okay, what about other? Krishnaraj is also getting A. Nice. You don't need to do anything. Ca is to O, that is 40 is to 16. Okay, and you just need to write it in a reduced form. So by dividing it with 8 5s and 8 2s, so that is the simplest ratio. बस इतना ही करना इसमें. So 5:2 is the right answer. Such type of question can also be there. Okay. So the next one. Question 12, I guess. 12 or 13. Okay, it's 12. When a carpet is beaten with a stick, when a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. It is explained by which law? So I'll give you the options. Newton's
थर्ड लॉ, inertia of rest, inertia of motion, and conservation of momentum. Okay, now we expect to answer. Very good, Isha. Everyone knows this concept. In notes we have written this in example as well. हमने लिखा था ये. चलिए. So I hope everyone is clear with this question. 12, inertia of rest is the right answer. बिल्कुल सही आंसर है वो. Question number 13. Formula unit mass of sodium carbonate, that is Na2CO3. Okay, Na2CO3. Option A is 106 atomic mass unit, 83, 100 and 142. Mass of sodium is 23, carbon is 12, oxygen is 16. These are given values. ये रख के तुम सॉल्व कर सकते हो आराम से. Atomic mass unit, formula mass unit निकालना है बस. You know how to do it. Okay, option A, very quick to solve. फटाफट कर दिया. Na2CO3. Okay, A. What about others? 106 atomic mass unit. Perfect answer है. 46 होगा, 48 होगा और ये 12 होगा. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14. velocity time graph of an object moving with uniform deceleration is blank. Option A, straight line parallel to time axis. Option B, straight line sloping downward. Option C, straight line sloping upward. And last option D, curved line bending upward. कौन सा सही आंसर होगा बताओ फटाफट. जल्दी जल्दी जल्दी, come on. Straight line sloping downward. Everyone saying option B. Sloping upward, curved lines. Downward or upward? It is sloping downward. Option B is the right answer. Okay. Straight line parallel to time axis. हम velocity time graph की बात कर रहे हैं. तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं ऑप्शन ए का, तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ क्या सजेस्ट करेगा? What type of motion that graph will suggest?
what type of motion that graph will suggest. हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है जो क्वेश्चन में दिया है. ऑल आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो ये ग्राफ क्या सजेस्ट करेगा वो तुम्हें बताना है, ठीक है. दैट ओनली यू नीड टू से. इन रेस्ट, ओके. हेलो. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म. All right. Any other? This graph shows uniform motion. रेस्ट पे ये तब शो करेगा जब वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. ओके. दिस ग्राफ इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन. स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, जो तुमने बोला यूनिफॉर्म, ये ऐसा जो क्वेश्चन में यूनिफॉर्म डेसेलरेशन, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, यानी कि ऐसा ग्राफ. ये ग्राफ क्या सजेस्ट करेगा? ये वाला ग्राफ जो ऑप्शन सी सजेस्ट कर रहा है वो क्या है, वो बताओ. What it suggests? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, वेरी गुड. इसका आंसर क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये यूनिफॉर्म डेसेलरेशन है तो ये वाला होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके. एंड कर्व्ड लाइन बेंडिंग अपवर्ड, सो इट विल बी लाइक दिस. तो ये लास्ट वाला ग्राफ क्या शो करेगा? ये लास्ट वाला ग्राफ क्या शो करेगा फिर? What that last graph will suggest? Good night. This is non-uniform acceleration, ये वाला. ओके. स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, बाकी नॉन यूनिफॉर्म. इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, हाँ वो भी बोल सकते हैं हम. एज यू से. और करने सवाल हो गया इतना आज का. Want to solve more questions? जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो. ओके, यस, नो, लेट्स सी. यस. Want to solve more? फिर क्वेश्चन 15, शायद 14 तो हो गए. एज यू विश. ओके, चलो 15 कर लेते हैं. Which of the following is polyatomic anion? ठीक है, पॉलीएटॉमिक एनायन बताना है हमें. NH4 प्लस, ऑप्शन बी O2 माइनस, ऑप्शन सी CO3 2 माइनस, एंड ऑप्शन डी
Na plus. Which is polyatomic anion. Okay, option A, option C, option A, option C. I think A. Okay, polyatomic anion. Okay, Isha have changed our answer. C कर दिया अब. Cause it's telling the anion. हाँ, ये सही पकड़ा है कृष्णराज ने. बढ़िया. ओके, किसी ने बोला तो सबने बोल दिया. ऐसा नहीं करना है. C is the right answer because it is anion, polyatomic anion. Then why not B? वो भी तो anion है, सेम चार्ज के साथ. वो भी तो anion है, सेम चार्ज ही दिया है उसमें भी, O2 माइनस का. तो B क्यों नहीं आ सकता है फिर? हाँ, वो पॉलीएटॉमिक नहीं है. ठीक है, ऑक्सीजन वहां पे अकेला है. सही है, वो पॉलीएटॉमिक नहीं है. चलिए एक और सवाल है यहाँ पे कि ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ. राइट, सवाल ये है कि विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ सेल ड्यू टू इट्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेंट. आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन अगेन. Which organelle is called the suicide bag of a cell due to the hydrolytic enzyme content? क्वेश्चन ये था, आप आंसर बता दो. चलिए फटाफट आंसर आ रहे हैं. बढ़िया है. लाइसोसोम्स. Lysosome is the right answer. Another question, theoretical question. Which law of motion gives the quantitative measure, that is formula of force? Which law of motion gives the formula of force, that is quantitative measure? Newton's first law, second law, third law की law of gravitation. Newton's first law, second law, third law की law of gravitation. क्या होगा? Quantitative measure, that is formula of force. कौन से law से हमें उसका formula मिला था? derive भी किया था हमने. You've gone through the derivation as well. किसी को नहीं पता है? No one knows. Gravitational law, first law. चलिए शायद फॉर्मूला लिखूं तो याद आ जाए. F is equal to ma. This is the formula of force. F is equal to change in momentum upon time. तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो कौन से लॉ से हमें मिला था? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या ग्रेविटेशन लॉ? अभी शायद याद आ जाए, फॉर्मूला दे दिया मैंने. चलो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट. फर्स्ट, सेकंड, देन व्हाट अबाउट अदर? क्विक क्विक क्विक.
जो भी याद आ रहा है बता दो, सही तो मुझे करना ही है। फर्स्ट, ओके फर्स्ट लॉ, द मीटर इज tilted towards द फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये तो आसान सा सवाल था, इसमें कंफ्यूज हो गए ये यार। दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ, दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। नोट्स में क्लियरली लिखवाया मैंने, ओके नोट्स में हमने क्लियरली लिखा है दैट फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज क्वालिटेटिव मेजर, क्योंकि उसमें हम इनर्शिया की बात करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ऐसा हमने नोट्स में क्लियरली लिखा था। याद आया? याद नहीं आया तो नोट्स पढ़ लो, इजी। एंड सेकेंड लॉ जो है दैट इज क्वांटिटेटिव मेजर, जिससे हमने ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमने नोट्स में भी लिखा है। क्वांटिटेटिव यानी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट किससे करते हो? सेकेंड लॉ से। फर्स्ट लॉ इज क्वालिटेटिव, जो है लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। बट सर वॉजंट सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम, ऐसा कुछ नहीं, सेकेंड लॉ न्यूटन का है, मोमेंटम का नहीं है। It is based on momentum, as you can see, rate of change of momentum, rate of change of momentum। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कम्स बिफोर द सेकंड। तुमको अगर सेकंड लॉ समझना है तो तुम्हें पहले मोमेंटम समझना पड़ेगा। अगर तुमने मोमेंटम क्लियर नहीं किया है तो तुम्हें सेकंड लॉ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका स्टेटमेंट ही वही है न्यूटन सेकंड लॉ का, राइट? उसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए। चलो छोटू सा डेरिवेशन है, दिखा भी देता हूँ। F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम यानी मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल यानी मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइड बाई टाइम। इसमें से मास कॉमन निकाल लो, तो ये होगा v माइनस यू बाई डेल्टा टी। दिस इज एक्सेलरेशन। तो देखो आंसर आ गया, F इक्वल टू एम ए। हो गया डेरिवेशन। समझ में आया? क्लियर है सबको? और भी डाउट है पूछ लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें। Still any doubt? You can ask. And if it's clear, you can mention it's clear, sir. Yes. Clear? So I guess there is no doubt. You're having the notes, you can refer it. So you all are sleepy. Okay, it's fine. We are keeping up to this. Again, your live next live session will be on the next week. So तब तक पढ़ाई करो, बढ़िया रहो, मस्त रहो, सो जाओ जो तुम्हें अभी जरूरत है ऐसा लग रहा है। और नेक्स्ट सेशन तक जितने भी डाउट्स है कलेक्ट कर लेना, ओके? एंड यू कैन ऑल्सो इन्वाइट एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन दिस सेशन, ताकि ये जो सारे क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करे। यहाँ पे चैट बॉक्स में अच्छे से बैटल बना रहे, हम देखते रहे कि कौन सबसे ज्यादा आंसर कर पाता है करेक्टली, ओके? यस कृष्णराज, बाय एंड गुड नाइट एवरीवन।